Chapter number 3, Physics, Kinematics of Linear Motion. Second equation of motion. Suppose a body starts with an initial velocity vi and travels with uniform acceleration a for a period of time t. The distance covered by the body in this time is s and its final velocity becomes vf. Since the acceleration is uniform, the velocity of the body increases or decreases by equal amount in equal time intervals. That is, the velocity changes at a constant rate. Therefore, average velocity is equal to vi plus vf upon 2. Distance travel is equal to नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नोटिफिकेशंस को ऑन करें. average velocity multiplied by time. Therefore, s is equal to vi plus vf upon 2 multiplied by t. From the first equation of motion, we have vf is equal to vi plus at. Then it becomes s is equal to vi plus at upon 2 multiplied by t. Now it becomes s is equal to vi plus at upon 2 multiplied by t, and vi 2vi becomes 2vi plus at upon 2 and multiply by t. Now the t will multiply with 2vi, then it will become 2vit upon 2 plus at square upon 2. Then it becomes s is equal to vit plus half at square, and this is called the second equation of motion. हरकत की दूसरी मुसावात. मिसाल के तौर पर एक जिस्म है, वो हरकत शुरू करता है इब्तदाई वेलोसिटी vi के साथ और वो ट्रेवल करता है औसत इसरा के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, जिसको हम a से ज़ाहिर करते हैं, और ख़ास वक्त के लिए जिसको हम t से ज़ाहिर करते हैं. इसलिए हमें मालूम है कि जो फासला तय किया गया है, जो जिस्म ने फासला तय किया है, इसको हम s से ज़ाहिर करते हैं और उसके बाद उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी हो जाएगी vf. अब हमें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, यानी कि औसत वेलोसिटी, शुरू वाली वेलोसिटी और आखिरी वाली वेलोसिटी को हम प्लस करते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी कि vi प्लस vf अपॉन 2. और हमें मालूम है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय t. लिहाजा हम यहाँ पर s लिख देंगे और vi प्लस vf लिख देंगे और अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय t कर देंगे. अब हमें मालूम है पहली मुसाबात के vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vf की जगह vi प्लस at रख देंगे, ये खुल जाएगा ब्रैकेट, vi प्लस at और अपॉन 2 मल्टीप्लाई. vi कितने हो गए, 2vi हो गया ना, 2vi प्लस at अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई t. अब ये t जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2vit हो जाएगा अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 2. अब हम क्या करेंगे, vit प्लस इसको 1 अपॉन 2 अगर अलग लिखते हैं तो बात एक ही है ना, इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर. ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है.